डायनास तो डेमोक्रेसी में ऑलरेडी उसको हक मिला हुआ है, लेकिन जो गांधी के हत्यारे हैं उनके भी डायनास वाले डिबेट में आपको जाना ही नहीं चाहिए था नवल किशोर जी। अब आप नो एंट्री में घुसेंगे तो आनंद रंगनाथन न्यूक्लियर बॉम्ब निकालेंगे। अब लीजिए, न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा आप पे। आनंद रंगनाथन, बी माई गेस्ट, रिस्पॉन्ड। नहीं, मैं प्रोफेसर साहब की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि ये एक अकेले हैं जो कि डायनास नहीं है, पूरी पार्टी भरी पड़ी है। लेकिन मैं दोबारा रिट्रेट कर रहा हूं, आपको बीजेपी को जितनी गालियां देनी आप दीजिए, आपको तमाशा कहना आप कहिए, कुछ भी कहना है, लेकिन मिलिट्री का ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, इस पे आपने कोई भी लांछन लगाई, उसको तमाशा था, तो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अपोलोजाइज करो अभी। नो ना, आप माफी छोड़ो ना, माफी कौन, आपके पास हिम्मत है एक बार बोलने के लिए जैसा कौन है? Is he enjoying the being the son of home minister? Can you say that? Do you have guts to say that? No. May I also ask you that आपको क्रिकेट का इतना दर्द हो रहा है तो पूछ लीजिए जरा संजय झा से और कांग्रेस पार्टी से कि राजीव शुक्ला जी कौन है? शुक्ला जी का कुछ लेना देना है कि नहीं है? अरे एशिया कप में शुक्ला जी का लेना देना है कि नहीं, ये भी पूछ लीजिए। आप इधर उधर क्यों भागते हैं? कैसा आप एक टिप्पणी तो नहीं, आप जरूर सवाल पूछिए और प्रदीप जी जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सवाल तो शुक्ला जी पे भी पूछ लीजिए ना। डॉक्टर संजय झा, how come everything is wrong with only the BJP and nothing is wrong with the Congress party? You don't allow Shashi Tharoor to speak, Manish Tiwari to speak. Chidambaram calls, terrorists not from Pakistan but homegrown terrorists. You will not question Rajiv Shukla ji, who is waiting in the wings to become the next BCCI chief. I want to ask you how come no questions to any of them? And Jyotsna ji, I'm coming to you. Apologies for being late. Sanjay Jha. Yeah, Navika, I'm very astonished as to how the BJP is now very upset with Donald Trump when Mr. Modi campaigned by saying, "Ab ki baar Trump Sarkar." I find it laughable. You campaigned for the man. You made diplomatic history by being the first Prime Minister to campaign for somebody else. But don't interrupt me. I'm finishing. Give me 30 seconds. I'm done. संजय जी, आज मेरे को माफ कर दो आप. To forgive me today. I am outraged as an Indian to see that Operation Sindoor is called as a tamasha, sir. Navika, if you 100 terrorists were allow him to killed. speak. Please go ahead. You want me to show you a crowning glory? Let me play out Imran Masood for you. Imran Masood. आज ही तो सवाल उठाए, आज ही मार दिया। इतनी तेज चल रहा है तो पीओके पे कब्जा कर लिए होते ना। ये काम तो पीओके पे कब्जा करके समझ में आता कि पीओके पे कब्जा होता हमारा। गौरव जी ने, राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था पार्लियामेंट में। राजनाथ सिंह जी ने 1 घंटे के भाषण के अंदर एक भी बार ये नहीं बता पाए कि पहलगाम के आतंकी को क्या था, और गौरव गोगोई साहब ने उसके ऊपर सवाल खड़ा किया और 1 ही घंटे के अंदर सारा का सारा काम। वाह, जो जयंत पांडा साहब ने कहा पार्लियामेंट के अंदर, तो इतनी तेजी के साथ कैसे आइडेंटिफाई भी हुए और पता भी चल गया, और आपने पार्लियामेंट में 1 मिनट में बता भी दिया। 3 terrorists being brought to justice today in Jammu and Kashmir, even that is being questioned. Have you seen the number of questions that have been raised by the Congress party today, Professor Jyotsna ji? Donald Trump in the White House, for heaven's sake, when this famous नविका जी, पहले तो बहुत देर के बाद मेरी बारी आई है, तो I would request uninterrupted time for myself. Absolutely. Here. One thing is, aren't you आपको इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात है ही नहीं नविका जी, because in their quest and in their thirst to demean the government, to target the government, to target NDA, they have crossed all limits. They have stooped to the lowest of lows. That's what I can say. Today, in the parliament and even before, after the Pahalgam has happened, you remember the Karnataka ministers, you remember various Congress leaders have literally called words which I don't even want to talk on camera here. I'll tell you one thing. For them, what they have done is, Navika ji, they have made a mockery of national security. For them today in the House, where we are discussing national security, we are discussing the courage of our armed forces, where we are discussing the success of our country, the success of each and every citizen of this country, these people, they have made it a mockery. They have made, for them, it is a reality show, a
sense of, I think a weapon for their entertainment. Ridiculous, shameful. That's what I would love to, literally call them. I'll tell you one more thing here. For them, here Operation Sindoor, which was successfully, done, which has dismantled the terrorist infrastructure in the Pakistan and the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, doesn't matter for them. It absolutely doesn't matter for them. What matters for them is fake news, ट्रंप ने ये कहा, या फिर कोई और ने ये कहा, या फिर कोई और ने ये कहा. Sir, the point is, sir, let me complete. The point is, आपको ये जानना चाहिए कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने क्या कहा, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने क्या कहा, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने क्या कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा. Navika ji, I'll tell you one more thing. Navika ji, I'll tell you one. I said I require uninterrupted time because ये बहुत हो गया. तमाशा ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, तमाशा कांग्रेस का चल रहा है, तमाशा ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, तमाशा आप लोगों का चल रहा है. At the cost of national security, at the cost of citizens of India, at the cost of our respect. As Indian, you have demeaned the respect today. You have no right to do that. Absolutely no right to demean the respect of any citizen. Sir, 1 minute. 1 minute. I said only one question. Answer my question also, please. Respect. I said, hold on. Let me complete. Let me complete. Sir, do you realize that in 2014, India was the world's largest defense importer after a decade. Today, 60% of our defense equipment is indigenously manufactured. So we are, from dependence, we have gone to self-reliance and we have to think of innovation. As Telugu Desam Party, we have spoken about it in the parliament today. Sir, talk about the country. And Navika ji, I have one simple query, one simple doubt. Terrorist, my dear. I want to make sure. Doubt with me or doubt with the opposition? Who's your question to? Which went to US. 1 minute. Navika ji, 1 minute. I said Shashi Tharoor ji was a part of the delegation which went to US. They have a problem of Trump calling that I have spoke about the cessation. Now, why wasn't Shashi Tharoor ji allowed to speak in the parliament? Why wasn't he? When he was the one who went to US and you say Trump तो सही बोल रहा है, आप लोग झूठ बोल रहे हो. आप लोग ये बोल रहे हो ना कि ट्रम्प सही बोल रहा है. आप लोग शशि थरूर को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं आप? शशि थरूर को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? Navika, can I answer that question? Yes, please. Well, I challenge. Right now, we saw. Madam, take a deep breath. Take a deep breath. Let others speak. हो गया, बहुत बोलिए. आप जरा शांत रखिए, जरा दूसरों को भी बोलने दीजिए. Sir, it is about my country, sir. Obviously, I'll be enraged. You call it a tamasha, I'll be definitely aggressive, sir. I'm sorry. आप जरा शांति लें. Take a deep breath, madam. बाबा रामदेव You का can't नंबर take it for granted. breath ले लीजिए. Okay, Navika, let me answer your question. We have seen how a very सर हम वो लेते हैं इसीलिए तो देश इतना अच्छा है सर. हम योगा प्रैक्टिस करते हैं इसलिए देश इतना अच्छा है. ये भी जान लीजिए.